Hello students, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Today we will be starting with lesson number 24, which is substances, objects and energy. Okay, so you will be studying about substances. How are the particles which are present in the substances? There is one theory which is given on substances by a scientist. You will be learning that. You will be learning the states, what are, how the substances, and they are in which state, whether they are in solid state, liquid state, gaseous state. You will be learning about that. You will be learning about the object. You will come to know more about object, what is the definite shape of the object, okay, and everything about the object. And at last you will come to an important topic, that is energy. Okay, हमें अपना काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, राइट? So the substances and objects which are present in our surrounding, they also need certain kind of energy. And in this lesson, basically you are going to learn about all the substances and objects which are present in your surrounding and what kind of energy they are having. Okay, so now it's time to visualize your surrounding and see which are the substances and object जो आपके आसपास प्रेजेंट है. ओके, आपको ऑब्जेक्ट्स का शेप देखना है, सब्सटेंसेस कैसे बने हैं आपको वो देखना है, उसमें कौन सी एनर्जी होगी, यू हैव टू सी दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन by recalling. And can you tell? So write few lines on the blackboard with a chalk and now observe the chalk. What you have to do, suppose this is the blackboard, आपको इस पे चौक से लिखना है. अच्छा, अब जब आप चौक से लिखोगे, what you will observe, चौक का साइज, if the chalk size was this much, आपने बोर्ड पे लिख दिया, तो will the chalk size will become this much? Yes, this happens, right? So why does this happen? आपने देखा होगा ना, जब आप स्कूल जाते थे तो योर टीचर माइट बी राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड सारा चौक पाउडर जो है वो उनके हेयर्स पे, उनके क्लोथ्स पे गिरता था. नीचे भी हर जगह ग्राउंड पे यू कैन सी द चौक पाउडर, राइट? तो जो पाउडर होता था, दोज पाउडर आर द फाइन पार्टिकल्स ऑफ द चौक. वो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं चौक के, ऐसे डॉट डॉट, दिस आर दी फाइन पार्टिकल्स जिससे हमारा चौक बना हुआ होता है. ओके, सो लेट्स सी दिस. व्हाट चेंज डू यू सी इन द चौक? Obviously, when we wipe the board with a duster and then tap the duster against the table, what do you see? See, chalk mein what change can you see? Suppose the chalk size was this much, so now the size of the chalk has reduced to this much after you have used up the chalk. Okay, so the size has changed. ठीक है? And when you wipe the board, suppose आपने अपना नाम, you have written all the details about yourself on the board. अब जब आप उसको wipe करोगे, उसको पोंछोगे डस्टर से. ओके, डस्टर पता है ना? I think so, it's there in this picture. See, इसको हम क्या बोलते हैं? This is called the duster. And ये जो डस्टर है, इसको हम एक जगह वॉल पे जाके ठोकते हैं and all the dust particle वो सब बाहर जाता है, right? सो जब आप उसको टैप करोगे डस्टर को टेबल के ऊपर, क्या देखोगे आप? बहुत सारा चौक का पार्टिकल्स वो उड़ेगा, पूरे एयर के साथ मिक्स होगा, राइट? सो द चौक हैज बिकम स्मॉलर एंड व्हेन द डस्टर वाज टैप्ड, what happened? All the particles of the chalk, they fell off from it. So all the particles with which the chalk was made up of, all the particles will fall down, and these particles were of the same color as the piece of the chalk. Suppose you have written with a blue chalk. ठीक है, आपने blue chalk यूज किया है, तो blue chalk जब आप डस्ट करोगे, वाइप करने के बाद when you will टैप इट ऑन द टेबल, तो क्या देखोगे आप? ब्लू कलर के पार्टिकल्स दिखेंगे आपको. जब आप रेड कलर के चौक से लिखोगे तो यू विल सी रेड पार्टिकल्स. जब वाइट चौक से लिखोगे यू विल सी वाइट पार्टिकल्स, राइट? तो दिस टेल्स अस दैट when you wrote on the blackboard, the particles of the chalk, they stuck to the board. ओके, क्या होता है? सपोज ये चौक है, तो ये चौक किससे बना हुआ है? छोटे छोटे फाइन पार्टिकल से. ओके, तो जब आप बोर्ड पे लिखते हो तो ये जो पार्टिकल्स है, दे गो एंड स्टिक ऑन दी बोर्ड, एंड जब आप वाइप करते हो तो ये पार्टिकल्स फिर से आ जाते हैं.
on the duster, है ना? So this is what we were studying about chalk and duster. And आपको इससे क्या समझा? We came to know that the chalk is made up of particles. ओके एंड जब आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो क्या होता है, ये पार्टिकल्स जाके ब्लैक बोर्ड पे स्टिक हो जाता है. जब आप रब करते हो सारे पार्टिकल्स डस्टर में आ जाता है, राइट? दिस इज व्हाट हैपेंस. नाउ यू हैव टू ट्राई दिस. टेक स्मॉल पीसेस ऑफ कैंडी शुगर और कोल एंड पाउंड देम इन अ मॉर्टर. ठीक है, इसमें हम अदरक को ये करते हैं ना, मसाला पीसते हैं. सो आपको एक मॉर्टर लेना है, इसको हम बोलते हैं मॉर्टर पेस्टल. क्या बोलते हैं? Mortar pestle in English. So this is the mortar and this is the pestle. Okay, mortar pestle लेना है, उसके अंदर कैंडी शुगर लेना है या तो कोल लेना, and then you have to make small pieces of it. Okay, now what you will notice कि जो आपने कोल लिया था, if the coal was of this size, आपने जब mortar pestle का यूज किया, the size of the coal has reduced and आपको fine particles, small particles मिल गए हैं कोल के. Right? So when you pound the coal or the sugar, it turns into a powder. Suppose it was like this. When you pounded the coal, or when you made it into small pieces, it became like this. It came into a powdered form. Right? So it turned into small particles. All substances we see around us, they are made up of very tiny particles. हमारे आसपास जितने भी substances present है वो कैसे बने हुए हैं? They are made up of tiny particles. Now what do you mean by tiny? Tiny means small particles. Okay, अभी जब आप किसी कारपेंटर को देखते हो, कारपेंटर जब वुड से काम करता है तो व्हाट यू सी दैट देयर आर सो मेनी सॉडस्ट लाइक दिस, है ना? एंड ये क्या है? दिस आर द पार्टिकल्स विथ विच द वुड वाज मेड अप ऑफ, राइट? सो यू मस्ट हैव सीन हाउ सॉडस्ट और पार्टिकल्स ऑफ द वुड फ्लाई व्हेन द वुड इज कट विथ अ सॉ. दिस इज कॉल्ड एज सॉ. ओके, ये सॉ है, दिस इज द वुड. तो जब हम वुड को सॉ से कट करते हैं, दिस इज द सॉडस्ट दैट वी गेट, बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स. एंड फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द वुड इज मेड अप ऑफ व्हाट? स्मॉल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एज सॉ. ओके, सो दिस इज द सॉडस्ट, है ना? तो हियर दिस इज अनदर एग्जाम्पल by which we can say that all the substances around us, they are made up of tiny particles or they are made up of small particles. ये भी देखा होगा आपने, when you go to village, उस टाइम ये ग्राइंडिंग होती है. गेहूं जो होता है ना हमारा, जिससे आटा आता है, तो वो गेहूं को ऐसे इस तरह से पीसा जाता है. एंड दिस गेहूं, wheat, when it is grinded in this is mixed all around. एंड जब इसका ग्राइंडिंग करते हैं, वी गेट दिस वाइट कलर का आटा, राइट? दिस इज द फ्लोर दैट वी गेट, है ना? सो दिस ग्राइंडिंग प्रोसेस से यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है कि ये जो वीट था, दिस इज अ वीट. ओके, ये जो वीट था दैट वाज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स दैट वी गॉट आफ्टर ग्राइंडिंग. अगर आप राइस की ग्राइंडिंग करोगे, यू विल गेट वाइट कलर का आटा, वाइट कलर का फ्लोर, राइट? सो दिस इज हाउ, these are the various examples by which we can conclude that the substances around us, they are made up of small tiny particles. Okay, see, when iron or copper is made smooth with a file, okay, you are using a file and you are making the iron or copper smooth, so you will get the particles of iron or copper there. Okay, see, suppose if you are using any of the other thing, let's take an example of pencil. Pencil को जब आप ये करोगे, when you will do this, mortar pestle में डालोगे, you will get the particles of pencil. When you will do it with the paper, when you will grind the paper, you will get the particles of the paper. जब आप कोल लोगे, you will get the particles of the coal. Okay, so जो भी substance आप ले रहे हो, वो स्मॉल पार्टिकल्स उसके ही होंगे. ऐसा नहीं है अगर आप चॉक का स्मॉल पार्टिकल करने जाओगे तो यू विल गेट पेपर वाला फाइन पार्टिकल. नो, इफ यू आर ग्राइंडिंग और इफ यू आर मेकिंग चॉक into smaller particles, you will get the particles of the chalk itself, और कोई नहीं होगा.
Okay, so all substances like pencil, chalk, paper, wood grain, iron, copper, coal, this all the particles, they are made up of fine particles. Fine means small particles. Okay, and the small particles of various substances that we can see are themselves made up of many tinier particles. Suppose you can see the small particles this much small, but when you will observe this under a microscope, ये small particle और भी ज़्यादा tinier होता है. like ऐसा होता है आपको दिखेगा भी नहीं, इतने ज़्यादा small tiny particles होते हैं. They are so small that they are not visible to our eyes. We cannot see those tiny particles. Okay, so lakhs of particles of any substances must come together to form a particle that can be visible to us. So suppose if you are seeing this particle, it means this contains lakhs of particles. Okay, but because when this much small lakhs of particles will come together, then only it will become visible to us. See, if I am putting one dot like this, can you see the dot? No. But if I will add some more to it, it becomes visible to your eyes, right? So this is how lakhs of particles will come together, and when you see this much small particle, it means there are lakhs of particles inside it. Okay, so this is how the substances are made. See, pehle small particles will come together, lakhs of particles, you will get this fine particle. And with this fine particle, when various fine particles will come together, they make up a substance. This is how the substances are made. Okay, see, use your brain power and tell me what are the small particles that can be seen in a beam of light that enters a dark room. Suppose this is a dark room and यहाँ पे सिर्फ एक beam of light, एक ray of light आ रही है, बाकी हर जगह क्या है, dark है. What can you see? आप देखोगे कि एक वो लाइट से you can see tiny particles. Okay, I want you all to do this experiment. सब कुछ बंद कर देना, सिर्फ एक रे आने देना एक होल से, तो you will see कि आपको ऐसे छोटे छोटे particles उस रेस के अंदर दिखेंगे. Okay, now do you know that the theory that all substances they are made up of minute particles were proposed long ago by Kannad Maharshi. So Kannad Maharshi was the one who told us and who put the theory that all the substances, suppose the substance is coal or the substance is paper, how are these substances made up of? They are made up of minute means small particles. Okay, how are the substances made up of? They are made up of minute particle. Okay, Kannad Maharshi was born in the 6th century BC at Prabhas Kshetra near Sorati Somnath in Gujarat. Where was Kannad Maharshi born? He was born at Sorati Somnath in Gujarat, and his given name was Uluk. What did he give the name as? Uluk. And he proposed that all living things in the world can be classified into 7 categories. तो Kannad Maharshi sir ने क्या बोला? That all the things that are present in the world, we can classify those things into 7 categories. And he was also the first to suggest that every object in the universe is made up of minute particles. ठीक है, so Kannad Maharshi was the first one who told us कि आप कोई भी object ले लो, कोई भी substance ले लो, every object and every substance, it is made up of small tiny particles. Okay, and he named that tiny particles as pillav. Now we call as fine particles, tiny particles, minute particles, but Maharshi Kannad, he named it as pillav. Okay, can you tell me, if there is a sudden shower, we take shelter under a roof at the roadside, है ना? अगर रेनफॉल आ गई, अगर आप बाहर रोड पे हो एंड इफ इट इज रेनिंग हैवीली, आप क्या करते हो? कोई भी शेल्टर के रूफ के इधर जाके खड़े हो जाते हो, सो दैट यू डोंट गेट वेट, राइट? So even though the rain does not fall on us directly, we get wet to some extent. Why? देखो, rain तो आप तक आ रही नहीं है because you are under the roof,
पर फिर भी आप थोड़े बहुत गिल्ले हो जाते हो. Why? Because of the tiny droplets, tiny raindrops. इसलिए ये tiny raindrops से you become wet. ओके, तो यहाँ पे भी वी कैन से कि रेनफॉल जो होता है दैट इज ऑल्सो हैविंग अ टाइनी पार्टिकल, माइन्यूट पार्टिकल्स, राइट. सो द रेन ड्रॉप्स दैट फॉल ऑन द रोड बाउंस ऑफ एंड ब्रेक अप इनटू ड्रॉपलेट. सपोज दिस इज द रेन ड्रॉप जो ऊपर से आ रहा है. अब जब ये नीचे गिरा ऑन द रोड, व्हाट हैपेंड, इट विल बाउंस ऑफ, ऊपर जाएगा फिर से, एंड दिस will break down into many small droplets. Okay, now these droplets are also made up of tinier particles. Suppose this is the droplet, so I told you that in this small particle also there are lakhs of tinier particles in it, right? So this droplet also are made up of tinier particles of water, and these droplets only they make us wet. It means that liquids are also made up of solid particle. Okay, so till now we studied about the solid substances and the solid substances like paper, pencil, coal, but now from this we are clear that liquids are also made up of smaller particles. Not only solids are made up of smaller particle, liquids are also made up of smaller particles. Okay, use your brain power. You have to make a list of all the everyday substances that we use in the form of powder. Okay, आपको सब चीजें लिखनी है. Suppose you can go in the kitchen and you will find many things. गरम मसाला होगा, there will be turmeric powder, there will be pepper powder, many powders we use daily. Carom powder हो गया, and we use many different powders. Okay, so you have to make a list of all the substances. ठीक है. Second is naphthalene balls are placed in warm clothes. आपने देखा होगा ना, जब मम्मा रख देती है हमारे warm clothes, तो she puts a naphthalene ball into it. Naphthalene ball ऐसा white color का होता है. Okay, ask mama, she will show you. Okay, after some days, why do the clothes also smell of naphthalene? आपने देखा होगा ना कि अगर मम्मा ने suppose कबर्ड है, कबर्ड में एक naphthalene रखा है. If it's new and naphthalene पूरा बड़ा है, तो whenever you will open the cupboard, आपको naphthalene का smell आना ही है. Why does this happen? And the clothes that you keep inside the cupboard, that will also smell of naphthalene itself. Why? You might have also seen that naphthalene balls, they are also placed in the toilets. So why do they become smaller after a few days? See, जब आप रखोगे ना उसको, उसका size will be this much, and what happened, as the day passes, it will become this much, this much, this much, this much, and then it will become invisible to us. Okay, why does this happen? See, naphthalene is a substance which is continuously being converted into smaller particles in the gaseous state. हमारे आसपास क्या present है? We are having air, right? तो ये जो naphthalene है वो continuously convert होता है small particles के अंदर, and such small particles from the ball, they settle on the cloth. We cannot see the small particles, the tiny particles. Okay, suppose this is the naphthalene ball and this is the clothes that you have kept. So what will happen? This naphthalene ball का size will decrease. Why it has decreased? Because इसमें से tiny particles, they went on the clothes and now they have sticked on the cloth, and that is why the cloth start smelling like naphthalene. Okay, so as the particles leave the naphthalene ball, the ball grows smaller in size and slowly disappears. So because the particles are going and settling on the clothes, and see, suppose now it is having 100 particles inside it. Okay, अभी 100 particles है and ये clothes है. You have kept it. Now it's been 10 days, and now what has happened in 10 days, you know, 60 particles, they have come on the clothes and they have settled on each and every clothes. And now the clothes have started smelling like naphthalene. So after 10 days, the ball will remain this much because it is only having 40 particles. And after 10 days, what will happen? It will disappear. Okay, why? Because all the particles, they are leaving the ball and they are entering the clothes. So particles of the rangolis are fine like a flour. Flour मतलब हमारा जो आटा होता है, हमारी रंगोली भी वैसी होती है, रंगोली particles, right? So rangoli colors are also in the form of grains, है ना?
use your brain power and tell me, suppose you do not have a rangoli powder, what things can you use as an alternative? Suppose आपके पास रंगोली पाउडर नहीं है तो आप क्या यूज कर सकते हो? Instead of black color we can use the coal powder. Yes, ब्लैक कलर नहीं है तो आप हम लोग कोल को ग्राइंड करके कोल पाउडर यूज कर सकते हैं. येलो कलर नहीं है तो वी कैन यूज टर्मरिक पाउडर, है ना. रेड कलर नहीं है तो वी कैन यूज एनी ऑफ द थिंग. और लाल मिर्ची यूज कर सकते हैं, राइट. लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर. और एल्स अपना क्रेयॉन्स जो होता है ना, हम क्रेयॉन्स का भी फाइन पार्टिकल्स कर सकते हैं अपने कलर्स का, एंड वी कैन यूज देम. देयर आर मेनी अल्टरनेटिव्स व्हिच वी कैन यूज इफ यू आर नॉट हैविंग एनी रंगोली. ओके. और ये रंगोली पाउडर भी कैसे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ फाइन और स्मॉल particles. Okay, see, so this was all about substances. Next you will be learning about the states in which the substances occur. Okay, अभी क्या देखा हमने सारे एग्जाम्पल से कि not only solid substances but the liquid and gaseous substances, they also occur as tiny particles, है ना. Till now what we have studied, and this is the conclusion what we have studied. हम बोल सकते हैं कि जो सारे सब्सटेंसेस हमारे आसपास प्रेजेंट है, दे आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. ओके. नाउ वी विल बी लर्निंग द स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंसेस इन विच अदर स्टेट्स द सब्सटेंसेस अकर. ओके. तो हमारा जो पानी है, वाटर, इट अकर्स इन 3 स्टेट्स इन आवर नेचर. कौन सा 3 स्टेट? फर्स्ट इज द सॉलिड स्टेट, सेकेंड इज द लिक्विड स्टेट, एंड थर्ड वन इज द गैसियस स्टेट. ठीक है. अब सॉलिड स्टेट में वाटर कब होगा? आप सोच रहे होगे वाटर एक सब्सटेंस जैसा कब होता है? व्हेन इट इज इन द आइस फॉर्म. ओके. आइस फॉर्म में वाटर कैसा होता है? सॉलिड. लिक्विड कब होगा? व्हेन इट इज वाटर. एंड गैसियस कब होगा? व्हेन यू विल हीट इट. क्लाउड से जो रेन ड्रॉप आता है, दैट इज ऑल्सो गैसियस फॉर्म. एंड व्हेन यू बॉइल द वाटर, उसके ऊपर आप देखते हो ना, तो दैट टाइम इट बिकम्स अ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. ओके. सी, अब पार्टिकल्स, हम टाइनी पार्टिकल्स पे बात कर रहे हैं कब से? तो सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में एंड गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स होते कैसे हैं? ओके. सपोज दिस इज द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन आइस, एंड आइस कैसे फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में. तो सारे पार्टिकल्स दे विल बी कंपैक्ट. कंपैक्ट मतलब पूरा जगह भरा हुआ होगा, एंड दैट इज वाई दे आर अकरिंग सॉलिड इन नेचर. इसलिए वो हार्ड होते हैं, बिकॉज सारे पार्टिकल्स कैसे हैं? कंपैक्ट, पूरा जगह भरा हुआ है. ठीक है. दिस इज हाउ द पार्टिकल्स आर इन सॉलिड सब्सटेंसेस. ठीक है. थोड़ा भी जगह नहीं होता एयर के लिए, कि पूरा भर गया. अब लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? सपोज दिस इज द वाटर. ओके. तो लिक्विड स्टेट में थोड़े दूर दूर होंगे. दिस इज द लिक्विड स्टेट. ओके. अब गैसियस स्टेट में कैसे होंगे? सी, गैसियस स्टेट में कैसे होने वाले हैं पार्टिकल्स? ऐसे. ओके. तो सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा होता है? सॉलिड होता है, राइट. सॉलिड स्टेट में सब्सटेंस बहुत हार्ड होता है. लिक्विड में वो फ्लो कर जाता है इजीली. गैसियस में तो वी कैन नॉट कैच इट ओनली, राइट. सो बिकॉज वो हार्ड क्यों होता है? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट एंड ऑल द पार्टिकल्स आर कंपैक्ट. ये क्या है? दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. व्हाट इट इज कॉल्ड? arrangement of the particle. And whenever an answer is asked on the states of substances, आपको ये तीनों draw करने हैं. Okay, you will get more marks if you draw this. ठीक है. So in all the 3 states, the individual particles of the water will remain the same. अभी सब individual particle मतलब ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैंने जितने भी बनाए हैं, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में ये जो मैंने बनाया है, एंड गैसियस स्टेट में, इन सारे पार्टिकल्स का साइज हमेशा सेम रहेगा. बस क्या है? सॉलिड में वो पूरा भरा हुआ होगा, कंपैक्ट होगा. लिक्विड के अंदर लूजली अरेंज्ड होगा. गैसियस के अंदर भी बहुत ज़्यादा लूजली अरेंज्ड होगा. ओके. हाउएवर द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल
in each of this state is different, right? How the particles are arranged, this is the only difference between the states of the substance कि particles एक तो solid के अंदर बहुत ज़्यादा compactly arranged है, liquid के अंदर loosely arranged है, gaseous के अंदर बहुत ज़्यादा loosely arranged है, right? So ये diagram आपको draw करना है whenever this question is asked in your exam, ठीक है? See, as a result, we see differences in the proportion of the solid, liquids and gases. इसलिए solid, liquid and gases में जो particles है उसमें बहुत ज़्यादा difference है ना. सबसे ज़्यादा particles कहाँ पे है? Solid के अंदर, उससे कम liquid के अंदर and gaseous में उससे भी कम. So there is a difference in the properties also of all the states. Okay, so all the substances in nature, they have a particulate form. Particulate form मतलब they are made up of particles. All the substances which are there, they are made up of small particles. In nature, every substance occur in a specific state. अभी हमने जैसे देखा कि सारे substances जो भी present है हमारे environment में, वो कैसे बने हैं? Tiny या small particles से, right? Tiny and small particles से बने हुए हैं and they occur in a specific state. Specific state means they can either be in solid state, they can either be in liquid state, or they can either be in gaseous state. So accordingly, that substance is called a solid, liquid or a gas. For example, aluminium and coal, they both are solid in nature because they are hard. Kerosene and petrol, they are liquid in nature, and nitrogen and oxygen are gases in nature. Now I want you all to at least remember 2 to 4 examples of solid, liquid and gases. ठीक है? Different substances have different properties. There are many lakhs of millions of substances which are present around us, and every substance have different properties. Okay, substances may differ with respect to properties like hardness, transparency, color, smell, solubility in the water, etc. अब जो substances है वो differ कैसे करते हैं? कुछ substances बहुत ज़्यादा hard होंगे, कुछ soft होंगे, कुछ transparent होंगे, जैसे water में अगर कुछ जाएगा तो you can see what you have put in the water. ठीक है, पर अगर आपने किसी suppose भाजी के अंदर कुछ डाल दिया तो you will have to find out कि वो गया कहाँ पे, because that is not transparent. ट्रांसपेरेंट होना मतलब पूरा वाइट होना, यू कैन सी. जैसे अगर आप खड़े हो तो दूसरे साइड से भी आपको दिख जाए अपना फेस, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, देन कलर में डिफरेंस होगा, उसके स्मेल में होगा. सल्यूबिलिटी मतलब क्या? सॉल्ट इन वाटर. सपोज आई हैव टेकन अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, दिस इज द ग्लास ऑफ वाटर विच आई एम हैविंग. अब मैंने इसमें इतना पानी है, अब मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया. ठीक है, अब क्या होगा? आप इसमें से सॉल्ट निकाल सकते हो क्या? नो, बिकॉज द सॉल्ट हैज नाउ मिक्स्ड विद द वाटर. सेम थिंग हैपेंस विद द शुगर. अगर मैंने शुगर डाल दिया द शुगर विल मिक्स विद इट. अगर मैंने पेंसिल डाला तो मैं पेंसिल निकाल सकती हूँ ना पानी से. वाई? बिकॉज पेंसिल इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, इट इज इनसोल्यूबल. तो इसको ही बोलते हैं हम सोल्यूबिलिटी ऑफ द सोल्यूबिलिटी इन वाटर, क्योंकि कुछ सब्सटेंस जो है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, but कुछ substances that do not mix with water. Okay, so the next topic is substances and the objects. So can you tell me, Asmita went to buy an earthen pot. Okay, you might have went to this shop like this and you might have bought something. Okay, so Asmita went to buy an earthen pot. She wanted an earthen pot. There she saw many things which are kept for sale. See, there are many things which are kept for sale here. How did she identify what she needed? उसको पता कैसे चलेगा कि उसको चाहिए क्या? Okay, from what substances had the potter made all the thing? Then अस्मिता के दिमाग में आया कि ये जो potter है, what is he using to make all this different things, and what is the difference between a substance and an object? So Asmita came up with so many questions, and so many questions were revolving in her mind, and now she wants the answer. Okay,
So the answer to this is, see, how she will identify that what she need, because she needs a pot, she will ask the potter, can I get the earthen pot? So he will show her different pots and she can purchase her best, right? And from what substance had the potter made all the things? So can you see here? He can use mud, he can use china clay, he can use many different things, and he can make up different substances and object out of it. Okay, now you will be learning about what is the difference between a substance and an object. Okay, now see, objects have a definite shape. Can you see the objects which are placed in this picture? A bat, a table, a chair, a wood, right? So these are different objects which are placed here and their parts are put together in a particular way. Okay, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है उनका जो पार्ट्स होता है उनको हम एक पर्टिकुलर वे में फिट करते हैं, एंड दिस ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम सब्सटेंस. डिड यू फाइंड आउट द डिफरेंस हियर? सी, सब्सटेंस कैसे बनते हैं? वी सॉ टाइनी पार्टिकल से सब्सटेंसेस बन रहे हैं एंड सब्सटेंसेस से क्या बन जाते हैं? ऑब्जेक्ट्स, राइट? दिस इज द कंक्लूजन व्हाट वी वांटेड टू नो, कि अगर आपके आसपास कोई भी सब्सटेंस है तो वो सब्सटेंस बना कैसे है? स्मॉल एंड फाइन पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट. स्मॉल पार्टिकल्स एक साथ आते हैं, वो सब्सटेंस बनाते हैं. जब सब्सटेंस एक साथ आते हैं, they make object. Okay, so look at the object in the picture above and what substances are they all made from? See, this is the wood. Wood is a substance. Okay, wood is the substance. Now we can make the table, the chair, we can make this, and we can make the bat also from the wood. So wood is the substance, and these four things, these are the object which are made from this substance. Understood? When you make tea, okay, tea is the object. What are you making the tea with? You are using tea powder, you are using sugar, you are using milk. So this all becomes the substance. Okay, and tea is the main object. Understood what is the difference between the substance and the object? Substance is the thing from which you are making the objects. ठीक है? See, the next and the last important part is energy. Can you tell, we make useful objects from a variety of substances, right? We saw that wood was a substance from which we were making table, chair. तो हम बहुत सारी useful objects बनाते हैं substances से, right? Another use of substances that we get energy from some of them. Okay, so we are getting object from the substance as well as we get energy from some of the substance. Okay, so there is a car. Its tank is full of fuel. Fuel means the petrol, diesel and CNG. But the car is not moving. Why is that? Because no one is applying any of the energy and no one is driving the car. Okay. So when we have run a long distance, we feel tired and we have to stop. Why is that? If you study for a long period of time, if you study at least for 2 hours, you feel tired. Why? Because you have used all your energy, and now for studying later you need energy. In the same way, to drive the car you need energy. Even if your car is full of fuel, you will need energy to drive it. Okay, so what we can say, that the energy is required to do a specific work. And how you will define energy? The capacity of a body to do work. How much capacity your body is having to do any of the specific work, that is what we call as energy. Okay, so when petrol or diesel burns in a motor vehicle, energy gets released.
See, suppose you are using a motor vehicle car, and when you need petrol and diesel to make it move, right? So when you add this petrol and diesel, and when they will burn, they release some kind of energy which is causing your car or your vehicle to move. But if the petrol is finished, okay, or if it stops burning, because when the petrol will burn, energy will get released. So if it stops burning, the vehicle will stop running. So when something burns, energy gets released in the form of heat. When we burn something, there also energy is getting released, and in which form? In the form of heat. Okay, so we have learned that in our body too, energy is obtained by burning of certain substances, right? We are having fat, we are having calories inside our body, and when this fat and calories will burn, they give us energy. When we eat food, they give us energy, right? We also need some kind of fuel in the form of food, so that we get energy, right? So many machines can be run using fuel. We know many of the machines from which we get fuel, which run on fuel, right? So coal, diesel, CNG, LPG, this we have studied in our previous classes, right? So coal, diesel, CNG, LPG, petrol, these are the various substances from which energy is obtained in the form of heat. Why energy is obtained in the form of heat here? Because they are burning. When the coal will burn, it provides us heat, right? It means it is giving energy. When the diesel burn, it is also what is doing. See, when petrol or diesel burns in a motor vehicle, when they will burn, what they will give us? They will give us energy. And in which form? In the form of heat. Okay, so see, this is a coal, then these are the kerosene, you can say. This is LPG, the cylinder that we use, and this is a biogas plant. So when this fuels will burn, they give us energy. And in which form the energy is obtained? It is obtained in the form of heat. Okay, so when a person or a vehicle moves, heat energy gets converted into motion. What is motion? When you walk or any of the object starts moving, that is called as motion. Suppose earlier the toy was here. Okay, it's an automatic machine. You just have to press the toy and the toy will move. Okay, so toy was here, and when you press the button on the toy moved here. It means you have applied certain kind of motion. A motion has taken place because the place has been changed. Okay, इसको ही हम motion बोलते हैं. Okay, so the energy in the form of motion, when the energy is in the form of motion, it is called as kinetic energy. And all moving object is having kinetic energy. Suppose if any of the object is moving, which kind of energy is the object having? The object is having kinetic energy. Okay, for example, when the wind blows, जब हवा आती है तो windmill turn होता है. Have you seen the windmill? उसमें ऐसा होता है windmill. जब हवा आती है तो ये windmill turn करता है ना, ये घूमता है, एंड इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. ओके, तो ये विंडमिल टर्न होने लगेगा. सेलिंग बोट्स एंड क्लाउड्स विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट? व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन में है, वो अपनी प्लेस को चेंज कर रहा है, दैट मीन्स they are having which kind of energy? They are having kinetic energy. Okay, and this work is possible only because of the kinetic energy of the wind. Wind is moving. हवा मूव होता है ना एक जगह से दूसरी जगह. सो वो जब मूव होता है, इट गिव्स व्हाट? विच काइंड ऑफ एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, सी विच अदर मशीन्स यू नो यूज काइनेटिक एनर्जी टू डू सर्टेन टास्क? आपको और कौन से ऐसे मशीन्स का पता है जो काइनेटिक एनर्जी पे काम करते हैं? एंड फ्रॉम वेयर डू दे गेट दिस काइनेटिक एनर्जी? सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दिया गया है, देखो, अ सीलिंग फैन, okay, a mixer grinder, a water pump, these are all machines in which kinetic energy is used. सीलिंग फैन मतलब हमारा जो फैन होता है ना घर में, वो भी मूव करता है, वो अपने ब्लेड्स का पोजीशन चेंज करता है, राइट? सो दैट इज ऑल्सो हैविंग काइनेटिक एनर्जी. मिक्सर ग्राइंडर में वो जो मिक्सर की वाटी होती है, दैट ऑल्सो मूव्स
so that is also having kinetic energy. Water pump में आप pump को ऊपर नीचे करते हो, right? So that is also having kinetic energy. Why they are having kinetic energy? Because they are in motion. Okay, so they get kinetic energy from where? From the electricity. When we switch on the button, then only the ceiling fan will work. Mixer grinder works on electricity, right? And water pump also works on electricity. So electricity is also a form of energy. Okay, see, find out what is the original source of the energy for the electricity which is produced at thermal power station. You have to find out this. जो thermal power stations होता है जहाँ से electricity आती है, okay, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ओरिजिनल सोर्स क्या है, वहां पे पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है. ओके, यू हैव टू यूज योर ब्रेन पावर एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट यूजेस ऑफ हीट एनर्जी डू वी सी इन आवर डेली लाइफ. हीट एनर्जी हम कहाँ कहाँ देखते हैं हमारे डेली लाइफ में. यस, सी व्हेन यू कुक एनी ऑफ द फूड वहाँ पे भी हीट एनर्जी होती है. व्हेन यू यूज द गीजर वहाँ पे भी हीट एनर्जी होती है. व्हेन यू बॉयल द वाटर वहाँ पे भी हीट एनर्जी होती है, राइट? सो वी यूज मैनी डिफरेंट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ विच आर हैविंग एनर्जी. ओके, सो अभी तक हमने हीट एनर्जी के बारे में पढ़ा. वी सॉ विंड एनर्जी. नाउ the next are the other forms of energy. Okay, we use several devices in which the work is done using not heat. हम बहुत सारे ऐसे devices use करते हैं जहाँ पे work heat का use करके नहीं होता, but it use other forms of energy because there are various different types of energy and we have so many devices which doesn't work on heat, but there are other forms of energy which are present on it. For example, we use electricity to run the television, है ना. टेलीविजन मतलब टीवी को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, राइट? एंड इन इट जब आप टीवी यूज़ करते हो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में एंड साउंड एनर्जी में. बिकॉज अगर इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट नहीं होगी तो आपको टीवी में दिखाई कैसे देगा? Because of the light you can see, right? And आपको सुनाई कैसे देगा? So because of the sound energy you can hear the sound which is occurring in the TV. So TV में कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है? सॉरी, टीवी की जो इलेक्ट्रिसिटी, जब हम टीवी यूज करते हैं वी आर कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? Light energy and sound energy, these are the two other forms of energy. Okay, so in a solar cooker or solar water heater, solar energy is used. Solar heater or solar cooker में we are using which energy? Solar energy. Why it is called as solar? Because we are getting the energy from the sun. Okay, then plant uses sunlight to prepare their own food. So in this process, energy from sunlight is stored in the food substance they make. Now plants are making their own food using the sunlight, right? Using sunlight, water, carbon dioxide. तो ये जो sunlight plants को मिलता है, they are storing the energy. जो भी sunlight से energy मिल रही है वो उसको store करेंगे अपने food के अंदर. Okay, and these are the substances that burn in our body. And हम जब ये food को खाएंगे, these substances that get burned in our body and gives us the energy so that we can do all types of work that are needed to be done. Okay, and when we burn substances like coal, mineral oil, stored energy, they contain is converted into heat energy. Okay, this coal, mineral oil and stored energy, they get converted into which kind of energy? They get converted into heat energy. Okay, see what is written here? Everything is energy. Coffee is equal to energy. Everywhere energy is present. Okay, now what are the different sources of energy? Sources means from where are we getting the energy? So we use various forms of energy such as heat, light,
sound, electricity, kinetic energy to do different tasks, right? अभी हमने ये सारे एनर्जी के बारे में पढ़ा है, राइट? हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, काइनेटिक एनर्जी. सो वी आर यूजिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमारे डेली टास्क को परफॉर्म करने के लिए. ओके, सो इन टूडेज वर्ल्ड आर मेन सोर्स फॉर ऑल ऑफ दिस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी. We are very much dependent on electricity now. For using any of the source we need electricity, and it plays a very important role in our life. Also, to produce electricity, many power stations use fuel. Now there was one question which was asked कि आप electricity, हाँ, electricity thermal power station में कहाँ से आती है? They get this electricity from the fuel. Okay, so see, ये जो है electricity का खंबा, we can get electricity from this waste, from burning the waste. We can get it from the industries, we can get it by the windmill, we can get it by burning the coal, and by dam also. You might be thinking कि डैम से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है. ओके, तो जब ये डैम का पानी मूव करता है नीचे की तरफ, यहाँ पे एक मशीन लगाई जाती है जिसको हम बोलते हैं टरबाइन. ओके, दिस यू विल स्टडी इन योर लेटर स्टैंडर्ड्स. टरबाइन रखेंगे, एंड जब भी यहाँ से पानी फ्लो होगा तो क्या होगा, ये टरबाइन मूव करेगा. when this turbine will rotate or when it will move, इससे इलेक्ट्रिसिटी का ये वाला खंबा जो होता है ना, it will be connected and electricity will generate. so this is how using the dam water हम लोग electricity generate कर सकते हैं. okay, now do you know that the stores of coal and mineral oil on the earth are limited, and if we are dependent on this coal and mineral oil for any of the reason, we are going to end up with it soon because these are limited. ओके, ये अनलिमिटेड नहीं है, जल्द खत्म हो सकता है. सो वी हैव टू यूज इट वाइजली. ओके, इन फ्यूचर वी विल हैव टू यूज मेनली सोलार एनर्जी, atomic energy for the purpose of producing electricity. Now we can use this coal and everything to generate electricity, but in future when this coal and mineral oil will come to an end, we have to switch to this solar energy. This is the solar energy, okay, and atomic energy for producing our electricity. ठीक है? Do you know that there are batteries which produce electricity using sunlight, and they are called as solar batteries. solar क्यों है? because sunlight के through इसमें एनर्जी आती है, राइट? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सोलार. तो ये बैटरी क्या है? सनलाइट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज solar batteries. okay, the heat of the sun, flowing water and the wind, they do not get depleted. खत्म नहीं होते कभी. sun का heat, flowing water and wind, ये तीन चीजों से we can produce electricity. okay, beside, when we use all these methods, the heat of the sun, flowing water and wind, they do not cause pollution when we produce electricity. Otherwise, when we burn the coal, we are causing air pollution, right? But when we use the heat of the sun, flowing water and the wind, they do not cause pollution and we can easily produce electricity. okay, but producing electricity by this method becomes expensive. okay, and in any method of electricity generation, resources from the environment have to be used. आप कोई भी method use कर लो electricity generate करने के लिए, पर आपको जो भी रिसोर्सेज आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जैसे कि हमारा सन का हीट, वाटर का फ्लो एंड विंड, आपको ये सारी चीज़ें तो यूज़ करनी ही पड़ेगी. एंड हेंस मेकिंग अ हैबिट ऑफ यूजिंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नेसेसरी इन टुडेज वर्ल्ड. ओके, तो हमें कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना है. वी हैव टू टेक केयर कि अगर हम रूम में नहीं हैं तो वी आर नॉट कीपिंग द फैन ऑन, वी आर नॉट कीपिंग द लाइट्स ऑन, वी आर नॉट कीपिंग द गीजर ऑन. We have to switch off all the appliances, okay, when we are not using it, and this way we can conserve our electricity. okay, always remember that sunlight, wind and water, they are non exhaustible sources of energy. ये कभी exhaust नहीं होंगे, कभी खत्म नहीं होंगे. तो हवा हमेशा रहने वाली है, पानी हमेशा रहने वाला है, and sunlight भी हमेशा रहने वाला है. okay, they must be used to the maximum extent as an alternative sources of energy.
ठीक है, तो ना कि हमें कोल पे डिपेंड होना है, मिनरल ऑयल पे डिपेंड होना है अपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए. वी हैव टू यूज द सनलाइट, विंड एंड वाटर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट. जितना ज़्यादा हम इनको यूज करके एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, वी शुड जनरेट फ्रॉम देम इंस्टेड ऑफ यूजिंग द अदर रिसोर्सेज. ओके, so what can you see in the picture? A little effort can save a lot of energy. What we have to do, we just have to put little effort and it will save a lot of energy. What we have learned in this lesson, we studied that every substances which we see around us, they are made up of minute means small, or you can also call it as tiny particles. Okay, then we studied that we can make different objects from the same substance. जैसे कि हमने wood देखा, wood से we can make table, we can make chair, we can make many things from one substance. We can make many different objects, right? As I told you that wood is a substance and table and chair is the object, right? Then we saw that the substances, they occur in three states. Which are the states? Solid state, liquid state and gaseous state. Okay, what is energy and how you will define energy? The capacity of a body to do work is called energy. इसलिए जब आप थक जाते हो, आप क्या बोलते हो? आप ऐसे बोलते हो क्या मैं थक गया, बहुत कम ना. यू से दैट अब मेरी एनर्जी खत्म हो गई है, आई कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ वर्क नाउ. सो मीन्स द कैपेसिटी दैट योर बॉडी इज हैविंग टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी. ओके, एंड वी सॉ वन काइंड ऑफ एनर्जी. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस मोशन में है तो सारे मूविंग थिंग जो होते हैं, जो भी मूव कर सकते हैं, दे हैव विच काइंड ऑफ एनर्जी? दे आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी. Okay, and what are the various forms of energy that we have learned? We saw heat energy, light energy, sound energy. Electricity is also a form of energy, right? And we use all this energy in our daily life to do our different kinds of work, right? Sunlight, wind and water, they are non-exhaustible sources of energy. So instead of depending on coal, mineral oil, petrol, diesel, fuels, we should try to get an alternative so that we can have a maximum use of sunlight, wind and water. ठीक है, हमें किसी और रिसोर्सेज पे डिपेंड ना होना पड़े, बिकॉज दिस आर नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ये कभी खत्म नहीं होंगे, कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे. ओके, so here we are done with the lesson substances, objects and energy, and I hope that you are clear with what are substances, what are objects and what are energy, and what are the different types of energy. Okay, so thank you everyone.